हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम टू मो एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल विथ राजेंद्र सर। तो स्टूडेंट्स, आज आम मैंने डिस्कसन करवा 50 एमसीक्यू विथ आंसर। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, टॉपिक रहा प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी मिक्स एमसीक्यू विथ आंसर आम डिस्कसन करवा जहाँ बहुत इंपोर्टाट अटे एवं बहुत सिलेक्टेड एमसीक्यू भितर अच्छी। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छे चैनल टी सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा समस्त इंपोर्टाट वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखे प्रथम पहुँची पार और वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देख तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हेबो। तो प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 रही, व्हाट डज द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी। क्वेश्चन नंबर 1 एगेन पड़ी, व्हाट डज द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी। आमर जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल रही सी कौन डिक्लेयर करे इंडिया कौन। तो आंसर है ए सोवरेजियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मेंशन्ड फास्ट इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तल लिखित केउ वार्डटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल रे उल्लेख कराई। आंसर है डी सोवरेजियन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द फेज वी द पीपुल ऑफ इंडिया इन द प्रिम्बल सिग्निफाई। आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल लिखाई वी द पीपुल ऑफ इंडिया ता कहा को सिग्निफाई करे बा ता कहा को दर्शाए। आंसर है सी द डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रिम्बल वाज एडेड बाय दी। आम जो टर्म यूज कर सोशलिस्ट प्रिम्बल रे भारत संविधान प्रिम्बल रे ता कहा द्वारा। आंसर है सी, आंसर है बी 42 अमेंडमेंट एक्ट 42तम अमेंडमेंट एक्ट जरिए यहाँ को भारतीय संविधान प्रिम्बल रे ऐड कराई सोशलिस्ट शब्द टी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इज मेंशन्ड इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तल लिखित क्यों आदर्श लेखाटी आमर भारतीय संविधान प्रिम्बल लेखा उल्लेख अच्छी। आंसर है बी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रिम्बल। आमर जो भारतीय संविधान प्रिम्बल रिपब्लिक शब्दटी अच्छी ता कहा को सिग्निफिकेंस करे। तो आंसर है सी द कंट्री इज गवर्नड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। रिपब्लिक अर्थ है द कंट्री इज गवर्नड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज द प्रिम्बल एम्फासाइज। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन पड़ी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज द प्रिम्बल एम्फासाइजेस। आंसर है ए डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर स्टेट। आम प्रिम्बल क्या एम्फासाइज करे तल लिखित क्यों प्रिंसिपल टी। आंसर है ए डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8, इन द प्रिम्बल द फ्रेज जस्टिस रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जस्टिस। आम भारत संविधान जो प्रिम्बल रे जस्टिस गोटे फेज अच्छी ता तल लिखित क्यों जस्टिस को रेफर करे। आंसर है ऑल ऑफ द एबव, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। तो आंसर से डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म फ्रैटर्निटी इन द प्रिम्बल रेफर्स टू। आमर जो फ्रैटर्निटी शब्दटी प्रिम्बल रे उल्लेख कराई ता कहा को रेफर करे। आंसर है ए सोशल इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन पड़ी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा। द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तल लिखित क्यों डॉक्यूमेंट को आधार कर इंडियन प्रिम्बल टी गठन कराई। आंसर है सी द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। क्वेश्चन नंबर आमर आसीगला फंडामेंटल राइट्स उपर किसी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो फंडामेंटल राइट्स कहले आमर मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 1 रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तल लिखित क्यों गोटे फंडामेंटल राइट्स अटे भारतीय संविधान अनुसार। आंसर है बी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जहाँ भी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कराऊँ स्टूडेंट्स मैंने समस्ते मन रख, यह बहुत इंपोर्टेंट अटे। हालकर यहाँ को नियो ना, वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देख, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमने पाइब। देन फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन नंबर 2 आसी, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू इक्वालिटी गारंटेड। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन पड़ी, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट
is the right to equality guaranteed article 14. Article 14 रे right to equality उपरे उल्लेख कराइছে भारतीय संविधान रे. Question number 3, which of the following is not a part of the right to freedom under article 19? Question number 3 again पढ़ुची, which of the following is not a part of the right to freedom under article 19? Answer है D, freedom of property. Question number 4, which of the following articles in the Indian constitution guarantees the right to life and personal liberty? भारतीय संविधान रे आम जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अच्छी केतम आर्टिकल लिखाई? आंसर है आर्टिकल 21. Question number 5, which of the following is a feature of the right to freedom of religion under article 25 to 28? Question number 5 again पढ़ुची fundamental rights रो, which of the following is a feature of the right to freedom of religion under article 25? Answer है A, the right to propagate religion. Then question number 6 ST, which article of the Indian constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? भारत संविधान केतम आर्टिकल उल्लेख कराई आम डिस्क्रिमिनेशन जो छुआ सहित भेदभाव? आंसर है आर्टिकल 15. क्वेश्चन नंबर 7 रही, the right to education is included as a fundamental right in the Indian constitution under which article? Question number 7 again पढ़ुची, the right to education is included as a fundamental right in the Indian constitution under which article? राइट टू एजुकेशन जो इनक्लूड करागला फंडामेंटल राइट्स रे ता केतेतम आर्टिकल लिखाई? आंसर है आर्टिकल 21A. क्वेश्चन नंबर 8, which fundamental right prohibits forced labor or beggar under Indian constitution? आमर भारतीय संविधान केतम आर्टिकल उल्लेख कराई जनक आम फोर्स करें सामूहिक रूप ग्रहण कर बेगर करने भिक मागे? आंसर है सी, राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोरेशन. आंसर है सी, राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोरेशन. Question number 9, which article of the Indian constitution grants the protection of rights regarding arrest and detention in certain case? Question number 9 again पढ़ुची, which article of the Indian constitution grants to protection of rights regarding arrest and detention in the certain case? Answer है article 22. ये क्वेश्चन आउ थे पढ़ुची मन रख, which article क्यों आर्टिकल उल्लेख अच्छे भारतीय संविधान रे जहाँ मंजूरी करे कौन? द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केस. आंसर है आर्टिकल 22. क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not a restriction placed on the fundamental right to freedom of speech and expression? क्वेश्चन नंबर 10 अगेन पढ़ुची, which of the following is not a restriction? तौर क्यों रेस्ट्रिक्शन प्लेस अटे ना क्या ना फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आंसर है डी, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द जुडिशियरी. क्वेश्चन नंबर 11 क्या ना फंडामेंटल ड्यूटीज उपरे, which article of the Indian constitution abolish untouchability? भारतीय संविधान केतम आर्टिकल लिखाई आम छुआछी अनटचेबिलिटी उपरे? आंसर आर्टिकल 17. Question number 11, which fundamental rights is available only to Indian citizens and not to foreigners? आमर क्यों अधिकार उल्लेख कराई फंडामेंटल राइट्स जहाँ केवल भारतीय मानक प्रযোज्य हेब, अन्य वैदेशिक लोक मानक प्रযোज्य अटे ना? आंसर है बी, राइट टू इक्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 13, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मेंशन्ड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आम जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अच्छी उल्लेख कराई भारतीय संविधान केतम आर्टिकल उल्लेख कराई? आंसर है ए, आर्टिकल 32. क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is a valid restriction on the right to freedom of movement under article 19(1)(d)? क्वेश्चन नंबर 14 अगेन पढ़ी, which of the following is a valid restriction? तो अलग क्यों गोटे valid restriction अटे क्या ना on right to freedom of movement under article 19(1)(d)? आंसर है बोथ ए एंड बी, नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ. क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is not a right to granted under the right to freedom
of religion in India. Question number 15 again पड़ुछि which of the following is not a right तले तो केउट गोटे राइट अटे ना जहाँ ग्रांटेड करे क्या अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया आंसर सी राइट टू कन्वर्ट अदर टू योर रिलीजन। तो स्टूडेंट्स ये आमर सरी जाइए पॉलिटिकल साइंस किसी बछा बछा एमसीक्यू डिस्कशन जदि ये एमसीक्यू आंसर डिस्कशन तुमको भल लगी तेरे भिडियोटी गोटे लाइक करिपार लिंक टी तुम सांगसाथी मान सहित तुम क्लासमेट्स मान सहित शेयर करिपार एवं चैनल जब प्रथम थर पे चैनल टी सब्सक्राइब करनियो। रोचे जय जगन्नाथ। नेक्स्ट वीडियो रे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड एमसीक्यू विथ आंसर सहित नहीं आसबि।